So welcome to Vanik Smart Class. So today we'll discuss again some questions from that is RI main exam questions and based upon last pattern. So जो questions हम आसुची previous questions past 2 years to 3 years questions हम देखेंगे तो किसी question practice करिवा. Let us see which type of questions are came in earlier and what the short solution for this for our aptitude point of view. Let us go to the question. तो फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन देखो क्वेश्चन नंबर कौन कौन देखो if ratio of salary of Rahul to that of Vijay is 1:3 and each spends 15% of his salary on his house rent, find the house rent paid by Rahul if remaining amount with Rahul and Vijay together is rupees 42,500. तो आम सर्ट रे करि परिबा एंड जदि आम मेन कॉन्सेप्ट पकोज निश्चय टाइम लगिवो तो व्हाट इज द शॉर्ट कैलकुलेशन फॉर दिस लेट अस सी. If ratio of salary Vijay and Rahul and Vijay. So Rahul is to Vijay. Salary is given 1:3. And each spends 15% of his salary on his house rent. House rent रे 15% salary खर्च करछन्ती. हम बजारची what is the rent paid by Rahul? First person. Rahul. Remaining amount with Rahul and Vijay is together दिया है या को इक्वेट करिवा 42,500 को इक्वेट करिवा. अरे 42,500 कोन ना इट इज 15% खर्च कला परे 15% खर्च कला परे दिस मच अमाउंट लेफ्ट आउट तो केवल सेटा भी इक्वेट कर ताले जदी 15% खर्च होउची ताले राहुल रो त लइला 85%. सिमिलरली विजय जदी 15% खर्च होउची रहउची 85%. ताले टोटल खर्च गला परे रहिला केते ना 85% इज 1 एक बार भी 85% of x one part plus 85 into 3% of again x 3x तब 3 5 15 3 24 1 25 255% of x and that is equal to 42,500. तला को सम कर देले 5 5 10 5 1 6 8 14 2 के 3 340% of x that is equal to 42,500. So हम पचारची what is the rent spent by Rahul. तो Rahul 15%. ताले what is 15% of x? That is equal to 42,500 by 340 into 15. ये हला शॉर्ट कैलकुलेशन तो कैंसिल करा को 0 कैंसिल 17 2 जार 17 दुने 36 17 दुने 34 85 17 85 250 दूरी काट दियो 125 तो 125 into 15 that is equal to 15 5 75 7 30 7 37 3 15 के 15 3 18 1875 that's the option is third option. तो रेस्पेक्टिव परसेंटेज को हमें सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करि परिबा तो 85% ऑफ वन पार्ट एंड 85% ऑफ थ्री पार्ट दैट इज इक्वल गिवन 42,500 तो व्हाट इज 15% ऑफ वन पार्ट तो मैक्स नहीं जी पार्ट जा x से तो दैट इज इक्वल टू 1875. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिबा. Question number 2. Number of students in 4th and 5th class is in the ratio 6:11. 40% in class 4 are girls and 48% in class 5 are girls. So what percentage of students in both the classes are boys?
ताको हम डायरेक्टली करि परिबा सो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ताले 4th एंड 5th क्लास रे जदी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हला 6:11 एला 4th एला 5th and out of this 40% class 4 hela girls tala boys pachar questions re what percentage of students in both the classes are boys tala am boys vidha bhar karo 40% jadi girls hebe tala 60% boys hebe to 60% boys sidha bhagari periya boys तो boys रो रेशियो कर दबो 60% in class 4th and also 48% is the girls जदी हेले class 5 रे तल remaining that is your boys तल 52% that is your 5th and that is total is केते ना 17 पार्ट तो आपको 17 रे डिवाइड करिबा तो 17 रे केते परसेंटेज आबो सो दैट आंसर इज कमिंग 60 into 6 360% plus 52 into 11 2 5 2 7 572% and by 17 so that is equal to 2 713 5 8 1 9 932 by 17% तो आपको कैंसिल करिबा 17 5 85 पहले 5 3 8 82 70 68 54.8% so that's the answer is coming second option B is the right answer तो डायरेक्टली हमें बॉयज भाग करि परिबा तो जदी 62% बॉयज 52% also boys the total boys percentage in 17 units तो 60 into 6 plus 52 into 11 by 17 next question is number 3 The question from ratio proportion, a certain amount was to distributed among A, B, C in the ratio 2:3:4 respectively, but was erroneously distributed in the ratio 7:2:5 respectively. तामने हमको 2:3:4 डिवाइड करिया कथा, but divide इची wrongly 7:2:5. As a result, B got rupees 40 less. ताले what is the amount? Total amount केते? ताले हम देखिबा इटी total amount is same. In first case as well as the second case तो first case and second case रे that is total amount समान तो total amount equate कर परिबा what is the total amount in first case what is the total amount second case तर आंसर should be तो प्रथम थिला 2:3:4 एडाला correct ratio and wrong ratio हेगला 7:2:5 तो हमहु वॉल्यूम इक्वल करे पड़िबो बिकॉज प्रथमे जति की पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हबार थला सेकंड केस रे सेति पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हबो तेनो हमकु समान वॉल्यूम परिवार अछि तो फर्स्ट रेशियो को सेकंड रेशियो जो डिफरेंट वॉल्यूम अछि एटी वॉल्यूम केते पार्ट अछि ना 4 3 7 2 9 पार्ट एटी वॉल्यूम केते पार्ट अछि ना 5 2 7 7 14 पार्ट तो फर्स्ट केस रे 9 पार्ट सेकंड के 14 पार्ट इक्वल नै तो हम कोन करबा दुटा को वॉल्यूम समान करिया पड़ियो फर्स्ट तले वॉल्यूम समान कले केता हो फर्स्ट रे हम एलसीएम ने मल्टीप्लाई करबा तले आदरे 14 मल्टीप्लाई करबा एवं आदरे 9 मल्टीप्लाई करबा तले 14 into 9 तले टोटल यूनिट ला केते 9 4 36 9 के 9 10 12 126 यूनिट लो 12 सम तो हम इक्वेट कर दबा राइट 126 सम तला को 14 मल्टीप्लाई कर दियो सो दिस विल बी 14 दूने 28 14 3 42 14 4 56 तो ये ला करेक्ट रेशियो डिवाइड होगा था रॉन्ग रेशियो कोन है जी 9 मल्टीप्लाई कर दबा 9 7 63 9 2 18 9 5 45 वर्तन एटा बी रसेयर तो बी पाएगा था 42 एक्चुअली बट wrongly got 18 units ताले हाउ मच बी लेस गॉट माइनस कर दियो 12 minus 8 ला 4 एंड 3 minus 1 ला 2 24 पार्ट ताले 24 पार्ट वैल्यू हम दिया छि जो लेस पाई छि तो 24 पार्ट वैल्यू दिया छि केते ना बी गॉट 40 रुपीस लेस तो इक्वल करो 24 पार्ट जदी 40 यूनिट्स ताले व्हाट इज द टोटल यूनिट दैट इज 126 पार्ट दैट इज द आंसर ताले 24 पार्ट जदी 40 यूनिट्स ताले 126 पार्ट इट इज इक्वल टू 40 by 24 into 126 चारे काटी परिबा 4 6 जार 4 काटले 6 काट दियो 6 काटले 4 6 काटले 6 2 जार 6 1 जार 4 काट दियो 10 the answer is coming 210 is the total sum that's a first option is the answer next question number 4 को जिबा
Question 4. M, N, O and P divided rupees 44,352 among themselves. M took 3/8 of the money, N took 1/6 of the remaining. Remaining माने इतने का distribute हो साला परे, then 1/6 of the remaining. Then rest again 1/6 distribute हो साला परे, remaining जहाँ बोलिबो that was divided among O and P in the ratio 3:4. ताले what is the share of O पचारिच. ताले O पाइतो कहते हैं यदि O and P 3:4 पाइबे, ताले obviously O पाइबो 3/7 of the remaining. Total part यदि 7 हला, ताले O पाइबो 3. तो सिंगल लाइन सॉल्यूशन करि परिबा. तो what is the single line solution for this status check? तो हमें पूरा अमाउंट ले परिबा. तो टोटल मनी रो 44,352 रो हमें दैट इज ओ रो शेयर भाग करिबा. ताले शेयर ऑफ ओ दैट इज इक्वल टू 44,352. रिमाइंडर जिबा. तो फर्स्ट खर्च हो गेल नै गेले 3/8 डिवाइड हला m पाइला 3/8. ताले बलिबो केते जदी 3/8 दैट इज m नै जिवो ताले रिमेनिंग अमाउंट 5/8. दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई करो 5/8 रे. दिस इज 5/8 इनटू अगेन ए अमाउंट रो अगेन n नै जो 1/6. तो n जदी 1/6 नै जो ताले रिमेनिंग बलिबो केते ना 5/6. ताले आगो 5/6 रे मल्टीप्लाई करो. एंड आउट ऑफ दिस सम जदी o पाइबो दैट इज 3 आउट ऑफ 7. Our share of O will be 3/7 of this. So this is the single line solution. Multiply कर दियो. So that would be cancel करो. पाँच 6 रे काट दो जी. 6 7 42 23 छत्री 18 55 सोना 54 चके 12 चौदुने 12 7392 7 रे काटो 7 के 7 0 728 7 35 742 8 काट दियो. के 8 1 9 10 25 8 3 24 8 3 16 132. तो 132 into 5 25 3 75. So that would be 5 10 5 3 15 7 14 14 15 15 30 कैरेट 3 5 के 5 7 3 21 21 5 26 26 3 29 कैरेट 2 and 7 के 7 we know 9900. That's why third option is the answer. तो रिमाइंडर क्वेश्चन सीधा हम डायरेक्टली रिमाइंडर फॉर्म में कैंसिल करि परिबा. तो दैट्स 5/8 5/6 and 3/7 of this share of A. This share of A. Next question जो है क्वेश्चन नंबर 5. The ratio of income and expenditure of a man is 3:2 respectively. If the income and expenditures of the man are increased by 30% and 20%, increase ichi dita go, that is income badichi and also expenditure badichi, then find the percentage increase in the saving re kete percentage padibo. तो हम जानिछे relation income equal to expenditure plus saving. relation ala income it is equal to expenditure plus saving. तो जो रेशियो हमको देछि कि फर्स्ट कोन देछि रेशियो रे प्रथम तला रेशियो इनकम टू एक्सपेंडिचर 3:2 पके दियो. इनकम जदी 3 पार्ट हबो तले एक्सपेंडिचर 2 पार्ट हबो तो ऑब्वियसली सेविंग पार्ट हबो 1. नाउ नेक्स्ट कोजी इफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द मैन इंक्रीजेस बाय 30%, ये 30% बढ़िला. It is equal to expenditure also increases by 20%. This is 20% बढ़िची. ताले what is the effect on that is question mark on saving. तो saving केते परसेंट बढ़ियो. तो हमें सही नहीं करि परिबा but better about डायरेक्ट फॉर्मूला पकि परिबा डायरेक्ट कांसेप्ट. तो saving will be increased. How much? एटा अपन करि परिबा. तो saving will be directly that is equal to 30 into 3 90% minus 20 into 2 40% by 1. So that is equal to 50% is the answer. The option is fourth option D is the answer. So directly हमें करि परिबा questions without any that is concept plus सहाय ननै कि मध्य करि परिबा. So this is the shortcut method for this type of questions. Next question हो जाए question number 6. If each interior angle of a regular polygon
is 4 times its exterior angle, then find the number of sides of the regular polygon. Polygon हम जानते that is interior angle and regular polygon रो sum is equal to 180 degree. तो हमें रेशियो बाकी दे परिबा. क्वेश्चन कहछि each interior angle of regular polygon is 4 times the exterior. तो interior by exterior ratio दला that is 4:1. And हम जानते sum मिसी 180 degree. तो 5 part that is equal to 180 degree. ताले 1 part equal to 315 and 536 degree. ताले each exterior angle पाइबा हमें 36 degree. क्वेश्चन कहछि how much sides? So sides पाई divide करिबा 360 degree, that is equal to 360 degree by 36. So that is a decagon because 10 sides are there. The answer is coming. This is a polygon having 10 sides, so it is a decagon. Next question is about question number 7. Seven goes the respective ratio of the present ages of Tanmaya and Tina is 6:5. It a present ratio is. Present ratio is of 2 persons. Tanmaya and Tina is 6:5. The age of Tina is 20 years hence will be 25% more. 25% more again. Then the present age of present age of Tanmaya. Tanmaya present age, Tina that is 25% more 20 years hence. So find the age of the Tanmaya 20 years hence. Tanmaya padarchi, so first person ro 20 year hence ro that is age padarchi. So cross product paki pariba better abo use this is age problem put the cross product. प्रथम रेशियो केते दिछि नाउ लिख दियो Tanmaya एटा देखो 3 प्रथम रेशियो देछि 6:5. And the age of Tina 20 years hence or this person and 20 years pore 25% more 25% more लागते 5/4. This will be 5, this will be 4. Now it is after 20 years plus 20, but this will be present age at 0 now. Cross product पकई परिबी ताले ये बढ़ी थबो नाउ रु प्रेजेंट 20 years hence this is 20 increase ये नाउ को नाउ this is 0 increase ताले क्रॉस प्रोडक्ट पकईबी ताले 6 30 minus 20 that is equal to 10 part difference कर परिबी 6 30 part minus 20 part that is equal to again 80 minus 0 that is equal to 80 ताले 10 part जदि 80 ताले 1 part equal to 8 तो 1 part 8 ताले 6 part Tanmaya पचारजी find the age of Tanmaya after 20 years hence तो 6 part. So Tanmaya equal to 6 part, so 6 into 8 that is equal to 48. But this is now age, this is present age. So that what is the age after 10 years? So after 10 years plus 10 kar deba plus that is 48. So the answer is coming 68 is the answer. So first option is here. It was after 10 years. So this is the answer for these questions. Next question is about question number 8. When walking at half of his usual speed, Raj takes 20 minutes extra to reach his office from his home. How much time does he usually take to reach his office? तो टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन हमें पके परिया प्रोपोर्शनलिटी तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट कोन हला वर्किंग हाफ ऑफ हिज यूजुअल स्पीड स्पीड जदी अधा हिजो तो टाइम डबल हिजो तो राज टेक्स 20 मिनिट्स एक्स्ट्रा टू रीच हिज ऑफिस मोर 20 मिनिट्स मोर नोज तले क्वेश्चन रे डिस्टेंस कांस्टेंट अछि जो डिस्टेंस कांस्टेंट थिबो तले हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी स्पीड इज इनवर्सली वैरीज टू टाइम तो जो डिस्टेंस को दैट इज इनिशियली कवर करथिला एट सर्टेन स्पीड एस स्पीड रे now बर्तमान स्पीड कमी गला तो s by 2 हे गला तो डिस्टेंस कांस्टेंट अछि ताले d इज कांस्टेंट ताले स्पीड इज इनवर्सली वैरीज टू टाइम तो स्पीड रेशियो जदी अछि 1 by 2 हेला इनिशियल थिला 2 एटा इनिशियल स्पीड इनिशियल 2 पार्ट थिला बर्तमान हाफ हे गला ताले टाइम रेशियो विल बी 2:1
and edala that is initial speed of time, edala that is reduction speed of time. So kete part adhiya nala na one part value dechi 20 minutes more nechi, one part jodi 20 minutes, ye we say 20 minutes, tale 20 minutes actually. How much time does usually takes to reach office? So actual speed re actual time wala 20 minutes. That's why answer wala 20 minutes he takes to reach his office, to reach in time. Next questions, number 9. The question is, from pipe and cistern, a tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. So what is the total time taken? Total time. This total time taken for the tank to get filled. ताले गोटे टैप रे एफिशिएंसी देछि, ये टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 hours. Suppose ये टैप A, one tap fill 1 liters in 1 hour. ताले capacity of tank पाइ जबा, tap can fill a tank in 6 hours. ताले capacity of tank is 4 liters, 6 liters. Then come to question. After half the tank is filled, that means half, there is 6 liters आधा fill up होबो, ताले 3 घंटा टाइम नबो. One tap 1 liters in 1 hour, so आधा means 3 hours fill up करिवो. ताले half time taken, so half time is 3 hours. And रहिला केते 6 liter रो 3 hour 3 liter fill up होला, so remaining amount is 3 liters. And taku fill up karibo kiye, after half of the tank is filled, 3 more similar taps are open. 3 more. आगुर गोटे थिला, बतन 3 more. बतन similar taps हेगला 4टा. ताले 4टा taps can fill 3 liters को. समस्त capacity 1 liter. ताले 4टा fill up करिए 4 liters. तो rest remaining time to fill. So that is equal to 3 by 4 hours. So total time that is equal to 45 minutes. Equal to 45 minutes. So total time to fill, that is equal to previously 3 hours plus 45 minutes. So 3 hours 45 minutes. The answer is coming option D. Next question is question number 10. Question 10 is mixture allegation. A mixture contains milk and water in the ratio 11:7. Milk and water is 11:7. Oscillators of milk. Wrong written, I think. What is written? When? This is when. When 80 liters of milk and 40 liters water is added to the mixture, then the ratio of quantity of milk to that of water becomes 5:3. So find the initial quantity of mixture. The question goes, initially it was 11:7. Mixture contains milk and water 11:7. Then 80 liters milk addition kala and 40 liters water add kala, then ratio he gala kate, that is become 5:3. Tale initial ratio lekho, milk is to water 11:7 and second ratio वाला कहते 5:3 and addition is कहते that is 80 liters milk and 40 liters water. तो हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट पकई परिबा. तो सेकंड मेथड जाउची क्रॉस प्रोडक्ट पे आउ शॉर्टकट पकई परिबा.
जो एडिशन गल सेकेंड रेशियोटा अधिक हवा दरकार जब इनिशियल रेशियो गोटे रेशियो अच्छी तो आम किसी आड करवा किसी मिल्क एडिशन किसी वाटर आड करवा तो ऑब्वियसली मिक्सचर अमाउंट बढ़िबो तेणु जो सेकेंड रेशियोटा को मु मल्टीपुल बढ़ाई पारिबी कहना 5:3 को किसी भी करि मल्टीप्लाई करी कौन करि पारिबी देखो 11 रो मल्टीपुल अधिक नहीं पारिबी ताले 11 अच्छी 5 3 15 करि पारिबी आको 3 कर दियो एथरे 3 मल्टीप्लाई कले एथरे भी 3 करबा ताले दिस विल बी 15:9 हे जो ताले तो बर्तमान एनालिसिस करो 11 पार्ट थिला बर्तमान 15 पार्ट हे जी ताले 4 पार्ट बढ़ी छी एठी और एठी 7 पार्ट थिला 9 पार्ट हे जी एठी 2 पार्ट बढ़ी छी नेठी 80 ए बी रेशियो 2:1 अछि ताले हम कहि परिबी 4 पार्ट इक्वल 80 नहीं पारी बा 2 पार्ट इक्वल 40 जाय नहीं पारिबी ताले 4 पार्ट जदी हला 80 लीटर ताले 1 पार्ट इक्वल 20 लीटर एंड क्वेश्चन में बजारची फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर तो इनिशियल तला 18 पार्ट तो 18 पार्ट इक्वल टू 18 into 2 18 दुने 36 360 लीटर इज द आंसर दैट्स व्हाई फोर्थ ऑप्शन इज द डी इज द आंसर फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 11 11 is there are 1200 students in a school 15% students in the school were from BPL family and out of which fraction is 2/9 2/9 were boys so find the number of girls from the BPL family so that is number of girls percentage तो it is a reminder question simple questions fraction रे multiply करि परिबा तो 1200 रो सीधा नै जाई परिबा तो सीधा आंसर सिंगल लाइन सॉल्यूशन नै परिबा देखो केते वन लाइन सॉल्यूशन करि परिबा तो गर्ल्स विल बी 1200 जन स्टूडेंट थिले तो 1200 जदि 15% स्टूडेंट्स आर दैट इज फ्रॉम बीपीएल 15% नवा काना बीपीएल रु बजार छी फ्रॉम बीपीएल फैमिली तो 15% नियो 15% फ्रैक्शन करि परिबा 15% फ्रैक्शन हला 15/100 तो जदि हमें 5 से काट दोजे ताले 3/20 पे ताले 1200 रो 3/20 इज द बीपीएल फैमिली and out of this if 2/9 is where boys so fraction again 2/9 are boys the remaining girls so 7/9 are the girls so 7/9 multiply कर दियो so that is equal to 20 cancel करो 60 3 का cancel 3 3 जा 3 3 का गले 20 तो 20 into 7 that is equal to 140 number of girls in this BPL family that's why option is fourth option D is the answer next question is question number 12 from compound interest question read the question first what will be the compound interest on a sum of rupees 31,250 for 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly amount ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 12 राइट 31,250 what is the compound interest on a sum of rupees 31,250 for 2 years again it is 2 years at 12% per annum but interest is compounded 8 monthly तो हम आगु पढ़ते हाफ ईयरली हम आगु पढ़ते क्वार्टरली ताले ये जो कांसेप्ट 8 months 5 months 4 months but that is 7 months ये भी क्वेश्चन आछि 9 months यदि इंटरेस्ट आछि तो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट द टाइम सो लेट अस सी फर्स्ट फाइंड आउट द रेट परसेंट केता हो फर्स्ट टाइम में भाग करछि रेट परसेंट ले 12% मींस annum माने वर्ष को 12 मास रे यदि 12% तले 8 मास रे दैट इज 8% इट इज वेरी क्लियर हमको 8 मास को इंटरेस्ट भाग पड़िबो और दिले तो 8 मंथली तले 12% ला 12 मास को तले 8 मंथ रे 8% तले हम 8% पाई गेले 8% equal to 8% सेकंड कौन हो जी टाइम टाइम टा कोन बताले 2 इयर्स 12% रेट रे 2 इयर्स तले 8% रेट रे केता होताले तले हम कहि परिबे 8 मंथली हम नौ जे इंटरेस्ट तले केतेटा 8 मंथ अछि 2 इयर्स रे सो दैट इज द टाइम पीरियड तो 2 इयर्स मींस मंथ विल बी द मंथ रे कन्वर्ट कर दियो तो 12 दुने 24 तो 24 मास रे केतेटा 8 मास अछि तो 24/8 that is equal to 3 years that's why time is equal to 3 years
तो ये हमारा दैट इज कैलकुलेशंस. So rate percent will be 8% and time period will be that is 3 years. Then you can calculate compound interest as per the formula. जहाँ कौन सी formula पकई परिबो, traditional पकई परिबा, concept पकई परिबो, otherwise हम shortest पकई परिबो. Shortest कौन कहूँ shortest पकाओ. So time 3 years थिले तो हम जानिचे compound interest will be 3a plus 3b plus c. First ए भाग कर दियो. ये कितना हो? That is principal दिया जी 31,250. प्रिंसिपल वाला 31,250 तार 8% तो 1% वाला 312.5 8% का तो 8.40 और 16 4 20 8 के 8 2 10 8 24 1 25 ये वाला ए ये जो एटा दिया जेट दिस द वैल्यू ऑफ ए ये वाला दैट इज 2500 बी भाग कर दियो बी वाला 2500 8% 1% 25 25 200 एंड सी कितना हो 200 8% 16 ताले सीआई कितना होता है 3 into 2500 plus 3 into 200 plus 16 so that is equal to 7500 plus 600 plus 16 6 1 6 5 11 7 8 8116 that's why option B is the answer. 8 month हो 9 month हो 10 month हो जेकोन सी टाइम जाती वो रेट परसेंट रे हम भाग कर परिबा से हम रेट परसेंट चेंज करे पड़िबो व्हाट इज द न्यू रेट परसेंट एंड व्हाट इज द न्यू टाइम तो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एज पर एनी फॉर्मूला यू कैन पुट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 13. Percentage question, reminder question again. Out of the total amount Aman had he spent jetika amount thila he spent 40% on food, 60% of the remaining on entertainment. Eta second, eta la first, and remaining amount is left 288. So find the amount spent on food. Food रे पचारची इनिशियली हम पचारने what is the total amount he left with it. वा कितना amount थिला तापर से कितना पचारने. But पचारची what is the amount spent on food. Reminder question करी परिबा. तो suppose 100 टका नहीं जाओ. Suppose 100 टका that is से तापर थिला. ताले 100 part 2 part divide कला first. First is food. ताले food रे खर्च कला कितना ना 40% एटा. तो फूड रे जदी 40% खर्च कला 100 टका रे 40 टका फूड रे खर्च करदी 40 पार्ट ताले बोलला केते 60 पार्ट पुन 60 पार्ट दुई बार डिवाइड हला तब खर्च कला केते ना 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट ता माने 60 रो 60% 10% 6 हो ताले 36 पार्ट 36 पार्ट एंटरटेनमेंट खर्च कला एंड 60 रो रिमेनिंग बोलला केते दैट इज 24 पार्ट इसो पार्ट रच दिस इज आल्सो पार्ट ये भी पार्ट सो पार्ट रच ताले 24 पार्ट तबे बोलुछ किंतु एग्जैक्ट अमाउंट देला तबे 288 टका बोलुछ ताले हम कहि परिबा फ्रॉम दिस डाटा डायग्राम 24 पार्ट र वैल्यू वाला 288 वन पार्ट केते ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 40 पार्ट फूड पचारछ ताले दिस इज इक्वल टू गिवन 288 ताले 24 बाय 40 लिख दोछ फूड 24 पार्ट दियाइची 40 पार्ट पचारछ आ रेशियो लिख दोछ सो दैट इज इक्वल टू 4 काटले 6 4 काटले 10 2 by 5 तो 2 पार्ट दिया 288 1 पार्ट 144 तो 5 पार्ट 144 into 5 सो आंसर कितना बताले 5 20 14 5 70 2 72 ये 3%. रेशियो कितना ला 24 पार्ट बाय 40 पार्ट अब यदि करीबी 24 8 5 40 3 by 5 3 पार्ट दिया 288 तले 1 पार्ट 3 27 318 96 तो 5 पार्ट 5 into 96 530
3 5 ना 45 3 48 480 टका ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन है तो 480 टका फूड रे खर्च होईची तो 40 पार्ट वैल्यू इक्वल टू 480 दैट द क्वेश्चन बदलछि तो जदि हम पचरंदा व्हाट इज द दैट इज टोटल अमाउंट ही इनिशियली हैविंग तले हम 1 पार्ट 96 बची तले दिस विल बी 9600 तो हम टोटल अमाउंट पचारने तो हम पचारछि व्हाट इज द अमाउंट spent on food how what is the amount spent on entertainment पाई जबा 36 पार्ट 1 पार्ट बार 96 तो 36 पार्ट 36 नु 96 मल्टीप्लाई करके तो रिमेनिंग अमाउंट पाई परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसो क्वेश्चन नंबर 14 14 is telling in a farm there are some goats and some hens only if the total number of heads are counted in the farm it is 42 total heads दिया है 42 and total number of feet counted farm 138 total heads is given total feet is given find the number of goats in the farm तो goat पचार ती प्रकार एनिमल अछंती जे गोट एंड हेन्स तक हम एक्स रे पकई परिबा लिनियर इक्वेशन पकई परिबा बट लिनियर इक्वेशन को अवॉइड करि परिबा तो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दिस क्वेश्चन लिनियर इक्वेशन को अवॉइड करि केम हम सॉल्व परिबा दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन तो हम लिनियर इक्वेशन को अवॉइड करो दीटा वेरिएबल अछि ओला गोट ओला हेन्स दी प्रकार दैट इज एनिमल अछंती तो heads are counted यदि 42 ताले total number of animals है 42 ये ला फर्स्ट इक्वेशन total number of animals is 42 because number of heads having every animal is 1 that's why total number of animals is number of goats and hens that will be 42 but this मानकर feet count करा जीवो the answer is coming 138 so feet because goats having 4 feet and hens having 2 feet that's why यदि हमें 4 times of number of goats को multiply करिबा 2 times of number of hens so that answer will be 138 बीटा इक्वेशन दिया अछि तो हम यदि गोट पचारते मु हेन्स जाउछ तले हेन्स केम जीवी सपोज टोटल हेन्स थिले सब जाको हेन्स थले सपोज 42 नंबर ऑफ एनिमल्स आर हेन्स गोट साथ नथिले तले समस्त हम दीटा लेग तले हाउ मेनी टोटल दैट इज लेग्स हाउ ही दांदा तले 42 into 2 that is equal to 84 that is legs the sambuja ka hens tha de the number of animals would be 80 number of legs would be feet would be 84 but actually feet kete count hichi na 138 यदि actually 138 count हिची तले हमको केते शॉर्टफॉल होची माइनस करो 84 माइनस करिबा तो 8 minus 4 is 4 and 13 आटा गले 5 तो 54 शॉर्टफॉल होची तो 54 काइंग शॉर्टफॉल होची बिकॉज़ हमें गोट को भी दीटा दैट इज काउंट करछ हेन्स दीटा फीट काउंट करछे बट गोट्स पे मते दीटा फीट काउंट करछे बट डिफरेंस केता अछि ना 2 त कहि परिबी ट्वाइस ऑफ गोट्स दैट इज इक्वल 54 तले गोट संख्या इक्वल टू 27 दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर तो 27 नंबर ऑफ गोट्स वुड बी देयर रिमेनिंग योर हेन्स यदि हेन्स बताइबो ताले 42 27 माइनस कर दिबो 12 minus 7 होला 5 that is 15 numbers of that is hens so hens will be 15 numbers so without equation madhya a type of questions am kari pariba to the exam point of view is very important to follow this concept next question jiba question number 15 average question read the question average of 4 numbers is 1725 the ratio of first to second is given 3/4 the ratio of second to third is given 10:9 ratio of fourth to third not third to fourth ako me interchange kari pariba fourth to third is 11:9 तो find the average of first and fourth तो प्रथम और fourth रो average पचार अगर रेशियो बार करो तो first number is a ताले a by b first number by second number रेशियो दिया first second 3/4
and B to C दिया second to third, so that ratio is given 10:9, and C to D दिया fourth to third दिया फोर्थ टू थर्ड दिखाई 11:9 उल्टे उल्टा करी 3:2 that is C to D करी 9:11 फर्स्ट भाग what is A is to B is to C is to D A is to B is to C is to D so the numerator first 3 into 10 into 9 10 30 30 into 9 270 ratio 4 into 10 into 9 40 9 36 360 similarly C 4 into 9 36 36 into 9 81 81 into 4 4 के 4 4 32 324 and D value 4 into 9 9 into 11 36 into 11 would be 6 6 3 9 3 396 तो रिडक्शन करबा 3 कटिबो सब 3 कटि देखो 3 कर दिया 90 32 36 20 3 7 3 8 24 3 37 3 के 3 108 3 के 3 3 3 9 132 अगेन 3 कटिबो 30 6 कटि जाउछ 15 20 6 6 48 14 12 22 ये लास्ट रेशियो 15 is to 20 is to 18 is to 22 सॉरी 14 12 13 6 ठीक है तो ये लास्ट रेशियो बिटवीन A is to B is to C is to D then come to question average of 4 numbers 1725 कारण average of 4 numbers कितना होगा this plus this plus this plus this अरे इक्वल टू सम कर दियो 8 2 10 10 5 15 5 1 2 के 3 1 4 2 6 6 1 7 75 75 पार्ट बाय 4 तो हमको दिया 1725 अगेन सम कर दियो 8 2 10 5 15 5 2 के 3 1 4 4 2 6 7 ठीक है 75 पार्ट बाय 4 दे 1725 पचार कोन व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ ताले 15 और 22 रो एवरेज ताले 5 2 7 एंड 2 के 3 37 पार्ट पचार 35 पार्ट बाय 2 तो 75 पार्ट बाय 4 दिया 1725 तो 37 पार्ट बाय 2 पचार सो दैट इज इक्वल टू 1725 इंटू उल्टा मल्टीप्लाई कर दो 4 बाय 75 इंटू सीधा मल्टीप्लाई कर दे पारिबी 37 बाय 2 दिस द आंसर कैंसिल करबा 2 2 काटि दिया फर्स्ट 2 25 काटो 25 3 75 25 25 150 60 70 22 25 ना 225 3 कटि पारिबो 3 6 3 3 9 23 23 into 2 46 तो 46 into 37 742 4 कैरी गला 742 728 36 18 8 16 2 के 3 46 46 plus 4 50 taken 0 carried 5 and 4 3 12 12 5 17 तो आंसर ला 1702 that's why first option is the answer next question jiba question number 16 read the question first. If 320% of x that is equal to y and y% of 200 is the same as same means equal to that is x% of a then find the value of a value
Find the value of A. पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमको 320% ऑफ x इक्वल टू y मैं ड्रा कर दूं संगे संगे 320% ऑफ ड्रा करछि सो 320% ऑफ x यदि y तला हम रेशियो कर दवा 320 बाय 100 कर दे परिबा देखो 320% ऑफ x दैट इज इक्वल टू y कैंसिल करा को फिर काट देले 16 फिर काटले 5 तले कोई परिबी x बाय y रेशियो दैट इज इक्वल टू बताले y पटु आसला सो 5 से पटु जियो 5 बाय 16 सो जो दीटा वेरिएबल अछि x एंड y तार हमें रेशियो पाई गले तो x जदी हला 5 पार्ट हले y हला दैट 16 पार्ट नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन एंड y% ऑफ 200 y माने 16 पार्ट 16 पार्ट रो परसेंटेज ऑफ 200 is the same as x% of a x वैल्यू केते पकै दोछि x जाय 5 पार्ट पकेबा में बिकॉज़ आउ फाइव पार्ट कन एक्स वाई रेशियो हम पाई जाइछे तो एक्स वाई जगह रे हमें 5 पार्ट 4 पार्ट पकई परिबा देन दैट इज 1 पार्ट कैंसिल हो एक्स वाई रहबन वेरिएबल रहबन आ ताले एक्स जगह 5 पार्ट पका तो 5 पार्ट ऑफ ए तार बजार ची व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पाई जा पार्ट पार्ट तो कटि जीवो तो 5 काट दियो 100 काट दियो फर्स्ट 100 काटले 2 5 पार्ट बाय 100 अछि x परसेंटेज अछि 5 पार्ट बाय 100 तो 5 से काट दियो 20 पार्ट कटि जो देन a इक्वल टू एबड खाली तळे 20 अछि सो देने 32 तो 32 into 20 0 दुने 4 640 दैट्स व्हाई फर्स्ट ता लास्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द आंसर ऑप्शन सी Next question number 17. On selling a cap for rupees 840, a seller earns a profit of X%. If the same article is sold for rupees 875, then he would earn a profit of X plus 5%. प्रथम पाउथला प्रॉफिट X% किंतु 875 रे बिक्री करबो ए भी बिक्री मूल्य जाईची प्रथम सेलिंग प्राइस देई 840 सेकंड सेलिंग प्राइस देई 875 किंतु आगु X% प्रॉफिट पाउथला बतन X plus 5% प्रॉफिट पाइबो तले कहि परिबी डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज 5% तले 5% ऑफ सीपी कना प्रॉफिट का पर बारे सीपी पर बारे तले कहि परिबी 5% ऑफ सीपी दैट इज इक्वल टू difference of two prices 840 875 difference that is equal to 35 ताले 1% of गते that is 7 ताले cost price पाई जिबा cost price of article 700 बट हम कोन बजार छी what is the x%, what is the initial profit percentage, what is x वाले बजार छी तो that means what is the profit percentage ताले cost price जो 700 अछि बिक्री करतला 840 रे 700 रे किने 840 रे इनिशियली बिक्री करतला जो x% प्रॉफिट पाउतला हम जदी x वैल्यू बार करबा तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ओवर 700 बार कर दे परिबा ताले 700 रे किनी 840 से बिक्री परची ताले x% इट इज इक्वल टू 140 टा 700 रा केते परसेंटेज बाय 700 इनटू 100 जीरो कैंसिल 7 ने 14 दैट इज इक्वल टू 20%. दैट्स व्हाई x वैल्यू इज कमिंग 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर दैट इज 18. Car A and car B are approaching each other at speeds of 21 km per hour and 15 km per hour. So two cars are approaching towards each other. So relative speed addition है जो तो 21 plus 15 है जो. If they are both traveling in the same road, then find the distance between the two cars 15 seconds before they collide. It is a concept of relative speed. तो हम जानते हैं distance equal to relative speed into time. तो distance equal to relative speed into time. So the direct पचारची for the distance between them before collide means collision है नहीं ताले time means 15 second
and speed is relative, both are approaching towards each other. 21 plus 15 मिसेई दबा तो 5 1 6 2 1 3 36 किलोमीटर पर सेकंड करिबा 5 by 18 and time जाइछि 15 सेकंड. So that is equal to 18 दुने 36 5 दुने 10, that means 150 unit meter. So before collision 15 seconds of before collide, so distance between them must be, that is 150 meter. Option is B. Next question is question number 19. 15 boys can complete a piece of work in 24 days, while 16 girls can complete the same work in 30 days. Find the time taken by 9 boys and 13 girls to complete the whole work. तो सीधा हम कदी परिबी 16 times of 15 boys plus 24 for different days. Okay. तो हम दिला को 15 boys can complete a work in 24 days. 15 boys into 24, 16. 15 boys into 24, right? That is equal to 16 girls into 30. पहले efficiency से कर दिया 15 into 2 and 82 jar 83 jar. তাহলে 3 boys equal to 4 girls. তাহলে boys by girls ratio वाला कहते हैं 4 by 3. चला efficiency ratio. Then come to question. Find the time taken by 9 boys and 13 girls. The amount of work कर दियो तो work equal to 15 boys 24 days नौचंदी 15 boys करे 15 60 टा काम तो 60 into 24 ताको की करिवे ना 9 boys 13 girls 9 boys plus 13 girls केते काम करिवे 9 boys करिवे 36 टा काम plus 13 girls 39 टा काम बेसिकली 9 6 15 3 3 4 3 3 6 1 7 75 टा काम सरीवे. The number of days will be 15 5 75 15 4 60 24 4 96 तो 96 by 5 days, so that is equal to 5 के 5 46 5 9 45 and then 10 19.2 days is the answer. That's why second option B is the answer. Next question is question number 20. Question. There are two paths of width 12 meters inside a regular field such that one path is along the length while another the breadth of the field. तब cross field रास्ता अछि. If length and breadth of the field is 178 meters, length देछि breadth देछि respectively, and both paths are intersect each other at the middle of the rectangular field. तब it is crosswise like this, crosswise path. Then the cost of paving the path rupees 2.5 per meter square. कहते cost लगी वो the rate of 2.5 per meter square. तो it is cross path. और था rectangular path inside था और outside था और circular path भी था. But this is a rectangular shape रे that is crosswise path. तो directly formula से available अच्छी से formula use कर direct answer पाई परिवा shortcut answer पाई परिवा. तो cross path area that is equal to length plus breadth minus W into W. ये ला पाथ एरिया. So दिया थी length दिया थी breadth दिया थी width दिया थी. This is width. And एती टांग खर्च आबो. तो cost आबो multiply कर दो cost. ये ला area तो cost that is equal to length पके दियो 170 plus 130 minus width 12 into 12 into cost वाला 2.5. So meter अच्छी unit meter ठीक है. Right 2.5 meter square. So this will be 170 130 300 minus 12 288 into 12 into 25 by 10.
5 पंजा 25 5 10 2 काट दियो 6 6 मुला कर 6 पंजा 30 288 इंटू 30 टका खर्च हम 0 3 24 24 25 26 2 300 7 8 8640 टका खर्च हम दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द आंसर so this is the straight formula length plus breadth minus w into w that is the cross path area next question kariba 21 rupees 4200 is invested at 30% per annum simple interest for 4 years. Interest question 30% invest होला and time देछि 4 years simple interest. And the interest received is then invested at 30% per annum compound interest compound annually. So interest invest होला compound annually for 2 years. And the compound interest received 8% कौन अछि compound annually for 2 years. Find the compound interest received. Interest मान अछि right same interest जना पड़छि same interest question यदि same interest question तार हमें 30% interest नवा ताले 4200 invested 30% per annum simple interest 4 years first interest भाग करो SI केता बताले SI would be 30% 4 वर्ष को हबो 120% 30% into 4 that is 120% 120% fraction was 6/5 20% is more 20% more is 6/5 ताले interest हबो 4200 into 6/5 so that is 5 काट दो जी 8 5 40 5 20 840 into 6 0 6 24 and 848 250 5040 टका that is interest 5040 टका इंटरेस्ट क्वेश्चन को 5040 टका इंटरेस्ट टाउ केवल इन्वेस्ट करला कंपाउंड इंटरेस्ट रे तार ई बिकम प्रिंसिपल तो 5040 को 30% नेट रे इन्वेस्ट करा गला तो व्हाट इज द दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 इयर्स तरवा करो 2 इयर्स हम जाने चाहिए सीआई फॉर 2 इयर्स हमें सीधा भी करि परिबा बट 2 इयर्स भाग करो सीआई फॉर 2 इयर्स 2a plus b प्रथम ए भाग करो 5040 30% 10% होला 504 ताले 3 गुना 312 3 पंचा 15 तापर बी हला केते ना 1512 तार 30% 10% केते हला 151.2 3 जने 6 3 के 3 15 3 45 ताले सी आई केते हो ना ट्वाइस ऑफ ए बार ची 1512 प्लस बी 453 टका 60 पैसा so that is equal to 24 30 30 plus 453.6 तो आंसर will be 0.6 ऑप्शन ए असलानी ताले 4 3 7 5 2 7 4 3 3477.6 that's option is first option next question देखिए so these are the questions we discussed today so thank you all of you for today's discussion if you look after these questions naturally it will benefit for you thank you all of you
सरला सरला